Namaste and welcome to 121 days of stress relief journey with Utkrisht Yoga. Great, you have completed 20 days. So today is the last day, 21 day of this series. आपने बहुत अच्छे से किया है and today is the last day and आज जो हम करने वाले हैं that is थोड़ा सा हम इमोशनल बैलेंस एंड कंप्लीट स्ट्रेस रिलीज पे काम करेंगे एंड कंप्लीट नर्वस सिस्टम हीलिंग एंड इनर पीस. तो ये पूरा जो भी 21 डेज़ का सेशन हुआ है सारी चीज़ों में हुआ है, हीलिंग में, स्टिलनेस में, ट्रांसफॉर्मेशन में, आपका पीस ऑफ माइंड में एंड आपका जो स्ट्रेस लेवल था, एंग्जाइटी था, उसको थोड़ा सा बाहर भगाया है. ठीक है, तो दिस इज़ अ प्रैक्टिस. ये हमने लर्निंग दिया है, तो यू कैन प्रैक्टिस इन आफ्टर द 21 डेज ऑल्सो. ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा है कि आपको 365 डेज डेली योग करना पड़ेगा. योग में आप कुछ भी पकड़ सकते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्राज एंड मेडिटेशन ऑल्सो. ये 3-4 चीज़ें आप पकड़ सकते हैं, तो अच्छा आपके बॉडी के लिए भी रहेगा, मेंटल हेल्थ के लिए भी, इमोशनल हेल्थ के लिए भी. ठीक है, तो इस तरह से आप धीरे धीरे इसको अपने लाइफ में उतारेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड वो सारी चीज़ें योग का पता चलेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट द मीनिंग ऑफ योग क्या है जब हम उसे प्रैक्टिस करते हैं. मैंने कई वीडियोस में पहले भी कहा गया है कि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम प्रैक्टिस करते हैं डेली तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बॉडी विद दैट प्रैक्टिस. उस प्रैक्टिस से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वो हमें पता चलता है. ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आराम से बैठ जाते हैं विद आइज क्लोज. Take a deep breath in and totally breathe out and just relax the body. Totally relax करते body को. Just natural जो breath चल रहा है आपका उस पर ध्यान देते. अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस. And just relax, get strong. And slowly stand up and we will do little bit warm up. 1, 2, 1, 2. And little bit run करेंगे पूरा body को. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And twist करके right side. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Just relax. Inhale up and exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and just relax. And bend करेंगे right side. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, and 10 and just relax. Be strong. थोड़ा arm rotation. Inhale up
and exhale down. Inhale up and exhale down. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and opposite side. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Just relax, Vishram. And come on, rotation here. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and opposite side. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Very good, very good. Bring a bigger smile on your face. 4, 3, 2, and 1. Just relax. Take both the hands straight. And 1, 2, 3, 4, and 5. And just relax, Vishram. 3 feet gap between the foot. Yes. And now we will do Veerbhadrasana. Bend the knee, kamar ko seedha, and take your both the hands straight. And just hold. And keep breathing. And slowly come back. Very good. And the left side. Kamar ko seedha, take your both hands straight and keep breathing. And slowly come out and just relax. And now 3 feet again, and now we will do triangle pose, Trikonasana. दोनों हाथों को स्ट्रेट एंड लिटिल स्लाइड करें एंड जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना आप नीचे जाए एंड जस्ट होल्ड. And slowly come up and just relax, switch around. And the left side, another side. Come both the hands straight. And keep breathing. And slowly come up and just relax. Just relax. And just relax in the child pose. आराम से just relaxation करते पूरा child pose पे. Just focus on the rhythm of your breath.
Take a deep breath in and breathe out and slowly come up and sit comfortably. आराम से बैठ जाते. And now we will do Brahmari Pranayam. Inhale with exhalation, make a sound of a hum. And just relax, Vishram. With the spine, right? Just relax the body. And now we will do Nadi Shodhan Pranayam.
And after this round, just relax. Just totally relax the body and focus on the rhythm of your breath. Take a deep breath in and totally breathe out. मुस्कुराते सांस छोड़े. And slowly and gradually you may open your eyes. Very good. Great job and well done and fantastic and excellent. You have completed 21 days of your series. 21 दिन आपने पूरे complete कर दिए. That is a great job you have done. तो इसी तरह से जैसे आपने 21 दिन कंप्लीट किए हैं, तो इन 21 दिन में जो भी आपको फ़ायदा हुआ है या जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या जो भी आपको फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड. तो वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं योर एक्सपीरियंस. एंड इसके बाद आपकी जर्नी असली स्टार्ट होती है. 21 दिन तो हमने साथ में किया है, अब आप 21 दिन तक और इसको रिपीट करेंगे ताकि आपका जो 21 दिन का शेड्यूल है और ज़्यादा अच्छे से बन जाए और प्रैक्टिस अच्छे से हो. कुछ अगर आपके बीच में सेशंस छूट भी गए हैं तो वो भी कवर हो जाएंगे आपके. ठीक है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो आप इसी तरह से धीरे 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 अपनी लाइफ को और स्मूथ बनाए और हैप्पीली बनाए एंड स्वस्थ बनाए और हेल्दी बनाए. ठीक है, हेल्थी, हैप्पी एंड डिजीज़ फ्री. ठीक है, तो स्लो ब्रीदिंग मे बी हेल्प टू रेगुलेट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड रिड्यूस द स्ट्रेस आपका एक्टिविटीज़ को. तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है हमें अपने ऊपर काम करने के लिए. तो आपको अच्छा लगा ना? ग्रेट. यस, ओके. तो अगर आपने 21 डेज पूरे के पूरे कंप्लीट किए हैं तो यू कैन राइट यस वी हैव कंप्लीटेड 21 डेज फुल्ली एंड यू आर हैप्पी, हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री. ये लिख सकते हैं. ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी सीरीज़ में आने का. एंड इसी तरह से आप हमारे को प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर कर देते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए. धन्यवाद एंड नमस्ते. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. नमस्ते.